डायमेंशनल एनालिसिस। सो पहले एक एनिमेशन देख लेते हैं। ये एक एप्पल का पेड़ है और इस एप्पल का पेड़ में जितना एप्पल है, हर एक एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज है। कैसे? क्योंकि ये एप्पल इस ग्राउंड से कुछ हाइट पे है। सो दिस हाइट पे जितना पोटेंशियल उसका अंदर में रह सकता है, उतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोरेज है। दिस इज डिपेंड अपॉन द हाइट। अभी एक एप्पल पेड़ से नीचे गिर गया ग्राउंड में, तो क्या होगा? तो दिस एप्पल का हाइट था h, तो उसमें जो पोटेंशियल जो एनर्जी, तो दिस इज द mgh, ओके। एंड दिस टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द half of mv square. So we can say this mgh equals to half of mv square, means the total potential energy equals to the total kinetic energy. अरे भाई, ये इस एप्पल का पेड़ से डायमेंशन एनालिसिस का क्या रिलेशन, तो वो भी हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे। तो अभी एक एप्पल को मैंने बीच रास्ते में रोक दिया, तो उसमें क्या है? इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन इसमें मिक्सिंग है। कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है एंड उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी है। सो वो कितना है? तो मैंने इस एप्पल को h डिस्टेंस में रोक दिया ग्राउंड से, एंड इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द mg स्मॉल h, एंड उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज हाफ ऑफ m स्मॉल v स्क्वायर। मीन्स इतना तक वो जब नीचे में ट्रैवल किया तो उतना इसका भी राइज किया। तो अभी इसमें क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिक्सिंग है। सो अभी हम लोग बोल सकते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू दैट वन, ओके। सो यहाँ पे देखिए दोनों का डायमेंशन अलग है। दिस इज द mgh एंड दिस इज द हाफ ऑफ mv स्क्वायर, एंड अगेन दिस mg कैपिटल h एंड हाफ ऑफ mv स्क्वायर, दिस इज स्मॉल v स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर, एंड दिस dimension is different from each other, but we can add and subtract. So means its dimension is the same, but इसका जो equation है, this equation is the different. So इसको हम लोग dimension analysis से prove करेंगे. So this half of mv square means is the energy, and it is the E, and in between the square bracket means it is shown only the dimension, not the magnitude. This should be important, you have to remember. This is in the square bracket, this E is in the square bracket, so we can say this is shown only dimension, not the magnitude, okay. Now if we solve this one, then we will get the m l square and t to the power minus 2. This m means mass, this is the capital M, and this v, so this v means l by t, length by t, so that this l by t square, so we will get the this dimension, and this is called the physical quantities, and this physical quantities dimension is the that one. Now you see the mgh, this is the potential energy, again this is the E, and this m means the capital M, and this g, so this g is the acceleration, means l by t square, okay, and this is the distance is the h is the l. So after calculation we will get the m l square t to the power minus 2. Now you can see here this two dimensions are same, so we can easily say that this two energy is the same, okay. Actually we know that this energy cannot be created or destroyed, okay. So this potential energy is totally conversion with the kinetic energy.
Now let's see the content. So first is the fundamental और बेस क्वांटिटीज, जिसका ऊपर बेस करके डायमेंशनल एनालिसिस है. सेकेंड इज द डायमेंशंस. थर्ड इज द फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिड्यूसिंग रिलेशन. फोर्थ इज द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस in an equation, and the fifth is the conversion of units, and sixth is the problems and solution. So after that you will everything knows about the dimension analysis. So first हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से. So these fundamental quantities should be independent of each other. This is the one condition. And all other quantities expressed in terms of fundamental quantities, and this is called the derived quantities. Okay, so अभी fundamental और base quantities को देख लेते हैं वो क्या क्या है. And this quantities is should be in SI unit. So हम लोग के पास बहुत सा यूनिट है, CGS है, MKS है, FPS है, but this fundamental or base quantities is in the SI unit. Okay, so length is in the SI unit is called the meter, and it is denoted by the small m, and this mass is kilogram and denoted by the kg, and this time is the second, electric current is the ampere, thermodynamic temperature is the Kelvin, amount of substance the mole, luminous intensity is the candela, and another two units, this is called the supplementary units, and these are the plane angle, it is the radian, and another is the solid angle, this is called the steradian. So, अभी हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को देख लेते हैं. उसका फॉर्मूला, डायमेंशंस एंड नेम ऑफ SI यूनिट्स. ओके, सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड यू विल गेट द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सम मैकेनिकल एनर्जी पावर. ओके, नाउ दिस इज द फोर्स इज द मास एंड इनटू एक्सीलरेशन. This force means the mass into acceleration, and if we calculate it, then we will get this dimension. And this is called the Newton. And another physical quantities को देख लेते हैं. This is related to electrical, and this is the current, this is the ampere, and this is the current quantity, this is the coulomb, electromotive force. So please pause this video and you will get all the physical quantities related to the electrical. And next is the dimensions. So these dimensions, all the physical quantities are derived from the base quantities. Again, the exponent of base quantity enters into the expression is called the dimension of the quantity. So इस दोनों में शायद आप कुछ नहीं समझ पाया. अभी हम लोग जो प्रूव करेंगे और दिखाएंगे, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो डायमेंशन क्या है. सो दिस फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके, सो दिस मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम. सो दिस एक्सीलरेशन मींस द वेलोसिटी बाय टाइम, एंड दिस मास इनटू लेंथ इनटू टाइम टू द पावर माइनस 2. Okay, so this velocity, actually this acceleration means L by T square, and this is called the Newton. And another physical quantities को देख लेते हैं. This is related to electrical, and this is the current, this is the ampere, and this is the current quantity, this is the coulomb, electromotive force. So please pause this video and you will get all the physical quantities related to the electrical. And next is the dimensions. So these dimensions, all the physical quantities are derived from the base quantities. Again, the exponent of base quantity enters into the expression is called the dimension of the quantity. So इस दोनों में शायद आप कुछ नहीं समझ पाया. अभी हम लोग जो प्रूव करेंगे और दिखाएंगे, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो डायमेंशन क्या है. So this force equals to mass into acceleration. Okay, so this mass into velocity by time. So this acceleration means the velocity by time, and this mass into length into time to the power minus.
2. Okay, so this velocity, actually this acceleration means L by t square, or you can say v by t. So after that, if we calculate this m, mass is the capital M, this length is the capital L, and this time to the power minus 2 equals to t to the power minus 2. So this dimensions of force means this mass is the 1, this exponent of the base quantity. Now you understand. And this expression is called the dimension. So this dimension means this mass is the 1, length is the 1, and time is the minus 2. Okay, now you can say like that way, m to the power 1, L to the power 1, and t to the power minus 2. Okay. Now this is the dimensional analysis of the viscosity. So if you understand this dimensional analysis, then you can easily find out the any physical quantities dimension. So viscosity means the shear stress by change of velocity by change of distance. So shear stress means this is the force by area, and the change of velocity means the length by time, and this change of distance is the 1 by length. Okay. So अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस फोर्स इंटू टाइम बाई लेंथ स्क्वायर. सो इफ वी डायरेक्टली, यहां पे मैंने इसका डायमेंशन लिख दिया, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स इज द ml t to the power minus 2. Okay, and this is the time is the t, and divided by length square mean L square. So if we calculate this, then we will get this dimension, and its SI units is the Newton second per meter square. Also its CGS unit is called the poise. And if you see the CGS unit, it is the dyne second per centimeter square, and its MKs is the kgf second per meter square. So if we converted this SI unit to CGS unit, then this dimensional analysis is required. How? So this SI units divided by CGS unit, so equals to m1 L to the power minus 1 t to the power minus 1. Okay, again, so this one, so इसको हमने डायरेक्टली लिख देते हैं. So इसमें जो मास क्या है, मास इज द केजी, और इसका L क्या है, L इज द मीटर टू द पावर माइनस 1, एंड T इज द सेकेंड टू द पावर माइनस 1, एंड सीजीएस में क्या है, इज द ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर माइनस 1 एंड सेकेंड टू द पावर माइनस 1. इसको तो काट जाएगा, तो अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को तो क्या आएगा, 100 आएगा. तो दिस m टू द पावर माइनस 1 मीन्स द 1 by 100 सेंटीमीटर. ये आएगा ग्राम, ये 1 by 1 सेंटीमीटर. सो ये सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है. तो इसके बाद क्या आता है, 10. सो दिस इस SI यूनिट में क्या आता है, 10 पॉइंट्स आता है. ओके, सो इफ वी कन्वर्शन with this SI unit to CGS unit, then we can say this Newton second by meter square equals to 10 points. Okay, so you can easily understand how we conversion the dimension. So if we don't know the dimension analysis, so it is difficult to conversion
the dimension from the one system to another system. So this physical quantities deducing relation. एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सो दिस इज ए पेंडुलम वॉच. सो इसमें जो पेंडुलम है, सो पेंडुलम मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, इससे जो वॉच है, वॉच का जो हैंड्स है, आवर हैंड्स, मिनट्स हैंड्स, ये हम लोगों को टाइम दिखाते हैं. तो लेकिन इसको हम दिस जो पेंडुलम, जो बॉब जो मूवमेंट करते हैं, वो किसका मोशन क्या है ना, दिस मोशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका ऊपर डिपेंड्स है? सो दिस इज डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट इज द बॉब मास. सो इसका जो मास है, इस मास का ऊपर ये डिपेंडेंट है. एंड सेकेंड इज द लेंथ, दिस अटैच विद द स्ट्रिंग. सो इसका जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ, इसका ऊपर भी ये डिपेंड्स. एंड द ग्रेविटी. सो एक्शन ऑफ ग्रेविटी में ये मूव कर रहा है. सो इसका जो और भी एक जो डिपेंडेंसी है, दिस इज द ग्रेविटी. सो अभी इसका जो टाइम है, टाइम पीरियड ऑन दिस क्वांटिटीज, उसको हम लोग अभी निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? सो t इक्वल्स टू this the k is the constant, this is the l to the power a, m to the power b and g to the power c. So we have to find out this the a, b and c. Then we will get the actual physical quantities of this time. Now this k is the dimensionless, तो इसको हम लोग dimension analysis में नहीं लेंगे. So we can say this t equals to l to the power a. This L का means that is capital L and M is the mass, means the capital M, and this G. So this G equals to L by T square. Okay. So this to the power C. If this G to the power C equals to L by T square to the power C. So after calculate, we will get the L to the power A, M to the power B, L to the power C and T to the power minus 2C. सो नाउ इसका कैलकुलेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं. सो t का मतलब क्या? t के पावर और कुछ नहीं है, तो t टू द पावर 1. तो पहले l टू द पावर 0, m टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1. दिस l टू द पावर 0 मींस द 1, m टू द पावर 0 मींस द 1. सो किसी का वो पावर 0 होता है तो उसको हम लोग 1 पकड़ लेते हैं. चलो वो एक्चुअली 1 है, तो m टू द पावर 0 मींस द 1. सो दिस इज इक्वल्स टू l टू द पावर a, m to the power b, l to the power c, t to the power minus 2c. So equals to l to the power a plus c, m to the power b and t to the power minus 2c. So इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? So this a plus c equals to 0, this one, and m का पावर b है तो b equals to 0 and this t का पावर 1 है, this minus 2c equals to 1. So this c equals to minus 1 by 2 and we calculate this equation, then we will get the a equals to half. Then we will get the equation, this one is t equals to k total root of l by g, because this t equals to this l to the power half into g to the power minus half. Okay. So look at that, we will get this equation. Now let's see the homogeneity of dimensions in an equation. So हम लोग तो जानते हैं जो डिस्टेंस का इक्वेशन क्या है. So एक पार्टिकल is moving a path with a certain velocity and acceleration. So after reaching some point, say how much distance this particle is covered. So this equation is the x equals to ut plus half of at square. So we have to prove this is the homogeneity of dimension. मतलब इसका जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन के साथ इक्वल है, तभी इसको हम लोग ऐड कर और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं
और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम डायमेंशन का ही रहेगा. तो दिस x in square bracket means this is the dimension, this is not a magnitude. This should be remembered. And this ut, this is the velocity into time, this is the L. How? This velocity means L by t, and this is the time means the t. So this t cancel and we will get the L. And this half of at square, this half is the dimension, this is the constant, and it is in the square bracket. So this is the only the dimension, this is not a magnitude. Okay, this acceleration into time square equals to L. So acceleration means L by t square and time is the t square. This is cancel, so equals to L. So हम लोग किसी भी इक्वेशन को इस डायमेंशन एनालिसिस के साथ देख सकते हैं ये इक्वेशन हम लोगों का सही है ना गलत है. सो ये डायमेंशनली होमोजेनिटी नहीं होगा तो ये इक्वेशन गलत है. दिस शुड बी रिमेंबर. नाउ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स. कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स तो मैंने आप लोगों को विस्कोसिटी में ही दिखा दिया था. फिर इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं अगेन. सो दिस P इक्वल्स टू F by A. P मीन्स द फोर्स, and after dimension analysis we'll get this mLt to the power minus 2 divided by L square. So this P is the pressure, actually force by area. This P is the pressure. Pressure is the force by area, and this is the dimensional analysis of this pressure. So we'll get the mL to the power minus 1 T to the power minus 2. So this 1 Pascal. 1 Pascal का मतलब क्या है? 1 kg into 1 meter to the power minus 1 into 1 second to the power minus 2. Okay. Now this 1 Pascal को हम लोग CGS प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? So this CGS में क्या है? kg का बदले में क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा, और मीटर का बदले में सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकेंड इज द सेम. So 1 Pascal divided by 1 CGS प्रेशर का मतलब क्या है? This 1 kg into ये 1 meter to the power minus 1, 1 second to the power minus 2, and 1 gram, 1 centimeter to the minus 1 and 1 second to the minus 2. So इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा. So equals to this one is the cancel. This 1 kg equals to 1000 gram into 1 meter to the power minus 1. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100. So this is the centimeter. So divided by 1 gram into 1 by 1 centimeter. So this centimeter, gram and gram cancel. This 2 0 is cancelled. So equals to 10. So this is our calculation. So this 1 Pascal equals to the 10 CGS pressure. Okay. So find the dimensions of. अभी कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज द एंगुलर स्पीड. सो दिस एंगुलर स्पीड का डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं. सो इसको ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी. सो थीटा इज द angle in terms of radian, and this is the t, and this theta is the dimensionless. So we can say this is the m0 l0 and t to the power minus 1. Okay, so t means the t. So this theta by t equals to 1 by t. So we can say like this way. So this is equals to t minus 1. Now we'll see the another problem. This is called the angular acceleration. So angular acceleration, this alpha equals to omega by t. So this one again, this dimension analysis is that t to the power minus 1 by t equals to t to the power minus 2. So next is the torque. So torque is the F into R.
force multiplied by the distance. So this is called the torque. So force का डायमेंशन क्या है? Force m 0 l 0 and t to the power minus 1. Okay. So t means the t. So this theta by t equals to 1 by t. So we can say like this way. So this is equals to t minus 1. Now we'll see the another problem. This is called the angular acceleration. So angular acceleration, this alpha equals to omega by t. So this one again, this dimension analysis that t to the power minus 1 by t equals to t to the power minus 2. So next is the torque. So torque is the F into R. Force multiplied by the distance. So this is called the torque. So force का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है m l t to the power minus 2 and multiplied by the l. So we will get the m l square and t to the power minus 2. Okay, so this is the torque. So actually ये torque कैसे आ रहा है? This should be you know. This torque means the force into distance. If you don't know this one, then you cannot calculate the or cannot find out the dimensions of this unit. Okay, so पहले आपको क्या जानना है? इसका जो physical quantities को आपको जानना है. If you know the physical quantities, then you can easily calculate the or find out the dimensional analysis. Second is the moment of inertia. So this moment of inertia equals to mr square. So m means the mass and r square is the l square. So you can say m l square. Now next is the electric field. So electric field E equals to F by Q. Q means I into T. So F, we know the F, M, L, this one, T to the power minus 2 divided by I into T. So इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका M L T to the power minus 3 into I to the power minus 1. So next is the magnetic field. So this magnetic field B equals to F by QB. Okay. V is the velocity. So again, F means the M L T to the power minus 2 and Q means that one I into T and V is the L by T. So L by T. So after calculating, we will find out the M T to the power minus 2 and I to the power minus 1. This T cancel and here the L cancel. Okay. Now you can easily understand. So this M T to the power minus 2 and I to the power minus 1. And magnetic permeability. This magnetic permeability is mu 0 equals to B into 2 pi A divided by I. So A means the L. This A means L and this 2 pi is the constant, means the dimensionless. And the B, so B means that one. So we can easily find out this one. This M T to the power minus 2 I to the power minus 1 into L divided by I. So that one you can find out the result. So let's see the next problem. So next problem is the let x and a stand for distance. Then we have to find out this equation dimensionally correct or not. So first of
जब ये इक्वेशन देख लेंगे ना तो आपको मन में एक आएगा, इस इक्वेशन को कैसे हम लोग डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज वेरी इजी इफ यू नो द प्रॉपर वे। सो इंटीग्रेशन का अंदर में क्या है, दिस dx एंड रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो दिस dx divided by root a square minus x square. So this x stands for distance and a stand for distance, means L. So this L root L square minus L square. So that one actually dimension, this is not a magnitude. Again I am saying you. So this is not actually 0. This is not 0. Okay. So this is the L. So again this root so equals to 1 or L to the power 0. You can say, we cannot say this is a 1, this is a L to the power 0 in square bracket. So this is the dimension, this is not a magnitude. So again if we find out that one, so this 1 by a sine inverse 1 a by x, so equals to 1 by L in square bracket into sine inverse square bracket sine inverse so means this is mean the 0 means this is a constant, so this should be L to the power minus 1, this is a constant, so this one is the constant. Okay, because this L in the square bracket and L in the square bracket means the L to the power 0 means the 1, you can say this is the constant. So if we calculate it, then we will get the L to the power minus 1. So again you see here, this L to the power 0 not equals to L to the power minus 1 in square bracket. So this equation is dimensionally not correct. So dimensionally